Okay, so good morning. So in the previous lecture, so we have started this solving the problems on unit number 2. That is how to calculate the different parameters like amplitude, damping ratio that we have started. So that we left in between that problem that we shall continue today. Okay. Okay. So this problem already I explained in the previous lecture. So only so we have left is that how to calculate the amplitude at 1550 rpm and phase angle at 1550 rpm. So we shall see once again today this problem. The vibrating system is displaced for vibration characteristics. The total mass of the system is 30 kg. Okay, though whatever the mass of the system, so that is used, its weight is 30 kg, its mass is 30 kg. So agar weight chahiye to, so we have to multiply by 9.81. So at the speed of 900 rpm, देखो this is at the 900 rpm, the system and electronic mass have the phase difference of 90 degree. देखो at this particular rpm, at 900 rpm, it's having the phase difference of 90 degree and corresponding amplitude is 18 mm. So amplitude of the vibration is 18 mm at that particular, in that particular speed. Mean मतलब 900 speed पे, so amplitude कितना है तो 18 mm and phase difference is 90 degree. The eccentric unbalanced mass is, so eccentric unbalanced mass is 1.2 kg and has radius of rotation is 45 mm. अभी देखो when there is a rotation, so that is called the eccentric. So center में है तो center से कितना displace हो गए तो उसको क्या बोलते हैं हम eccentricity. तो eccentricity is for eccentric mass is 1.2 kg and it is having the radius of rotation is 45 mm. Okay, so in this case what we need to do is, so we need to understand here is that first we need to determine natural frequency. So matlab what is natural frequency value. Second one is damping factor, that is also called it as a damping ratio. And third one is the amplitude at 1550 rpm. matlab amplitude at 900 rpm is given, it is to 18 mm, but हमारे को so amplitude find करने के at the speed of 1550 rpm and phase angle of at the phase angle at 1550 rpm. देखो इधर phase angle and amplitude is given at a speed of 900 rpm. हमको क्या find करने के, so amplitude and phase angle at 1550 rpm. Okay, so this we need to calculate. Okay, so in the previous lecture, so I explained first three terms how to calculate, that is natural frequency, damping factor and amplitude at 1550 rpm. So that in between our net connection was disconnected, so that's why, so I not able to continue that. So I think in the previous lecture Tejas was present. Okay, so once again I am going to explain in short. So mass is given is 30 kg
So system mass is given as 30 kg. So this mass is eccentric mass. It is 1.2 kg. So radius of rotation, that is eccentricity, is 45 mm, and this 45 mm is converted into meter, that is multiplied by 10 raised to minus 3. So afterwards, speed is 900 rpm. So at this speed, so this is the amplitude and phase difference, that is phase angle. So here we need to calculate the natural frequency, that is omega n, and zeta, that is natural frequency. Second one is damping factor or damping ratio. Third one is amplitude, and fourth one is phase at 1550 rpm. Okay. देखो, first is calculate the natural frequency of the rotating machine. अभी देखो इसमें, so we need to understand what is given data and what we need to calculate. And so earlier in the previous lectures, so I have given the formula also that we are going to use in this unit. So here we need to use the first formula, that is, देखो what we need to find is omega n. तो ओमेगा n फाइंड करने के लिए, तो अभी देखो कि first we need to find the whether it is natural frequency or not. हमको क्या फाइंड करने के, नेचुरल फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के. So we can directly, we can say that, sir, we can use directly omega n is equal to 2 pi n by 60, because so n is already given, that is 900 rpm. But हमारे को ये पता नहीं है वो whether it is a natural speed, what you can say, critical speed or not. Critical speed means natural speed. उसको हमको पहले प्रूव करना पड़ता है कि अगर ओमेगा एन whether it is natural frequency or not, natural speed or not. Critical speed मतलब क्या है, the speed at which resonance occurs. मतलब क्या होता है, so critical speed पे so body will vibrate at maximum amplitude. तो maximum amplitude से vibrate होने से क्या होता है, so that particular system is going to fail. So we always need to avoid that particular concept, that is resonance. तो उसके लिए हमको पहले जीटा फाइंड करना पड़ता है, नहीं तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी रेशियो. अभी देखो tan phase angle, this angle is given by tan pi, formula is given by 2 zeta into r by 1 minus r square. Pi means it is phase angle, zeta means it is damping ratio or damping factor, and r means it is frequency ratio, that is omega by omega n. अभी देखो, so everything is here, it is given, so only zeta and r is not given here. अभी देखो, if you substitute tan 90, so tan 90 is infinity. So इसमें क्या होता है, so anything by infinity is 0. तो anything by infinity is 0. 2 zeta by 1 minus r square, अगर 1 minus r square इस साइड लेके गए and tan 90 इस साइड लेके आया, मतलब 2 zeta r by divided by tan 90 means it is infinity. So anything by infinity will become 0. इसलिए क्या होता है, 1 minus r square is equal to 0. अभी देखो 1 minus r square take this side, bring infinity on the right side. So ये क्या हो जाता है, so right side it will become 0. So 1 minus r square equal to 0, मतलब r square equal to 1 and r is equal to 1. तो इसमें क्या होगा, frequency ratio is 1, मतलब system frequency by natural frequency is equal to 1 means omega is equal to omega n. r means क्या है, formula, r का formula omega by omega n. Omega by omega n is equal to 1 means it is omega equal to omega n. मतलब क्या होगा कि whatever the speed is given 900 rpm, so it is a critical speed. So it is a critical speed. Directly natural frequency is given by so 2 pi n by 60. अगर देखो, अगर if the n is, if the omega n is not, omega is not equal to omega n, not equal to omega n, मतलब r value is either more or less than 1. If it is not equal to 1, then so we have, at that time we have to find the value of n. Otherwise we need to find the damping ratio. So means other factors we need to find, so before we are going to find the natural frequency. Now r is equal to 1, so there is no need to find anything, so directly 2 pi n by 60. So n is already given 900 rpm, by 60 it is omega n is equal to 94.24
477 radian per second. So omega is expressed in terms of the radian per second, that is angular frequency. अगर इसको साइकिल्स पर सेकंड में कन्वर्ट करने का तो क्या करने का, तो यू कैन यूज दैट फार्मूला, दैट इज ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ. सो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ, अदरवाइज एफ इक्वल टू ओमेगा बाय 2 पाई. तो इसको डिवाइड बाय 2 पाई किया तो आपको साइकिल्स पर सेकंड, दैट इज हर्ज में कन्वर्ट हो जाएगा. सो दिस इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी. अभी देखो, सो इसमें क्या किया कि हमने कि वी आर कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ रेडियन पर सेकंड. सो प्रॉब्लम में कभी एग्जाम में कभी सो इन सम केसेस दे आस्क टू फाइंड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ हर्ज. जिस फॉर्म में फाइंड करने है उसी फॉर्म में फाइंड करने का. एफ में फाइंड करने के तो इन दैट केस सो यू जस्ट यूज द फार्मूला ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ, that is converting that angular frequency into circular frequency. So next is calculate the damping factor, that is damping ratio. Okay, so first of all, so इसमें क्या करने का, first of all amplitude is given in the problem. तो amplitude is equal to f naught by k into omega. f naught means क्या होता है इधर, that is force applied, that is eccentric force applied. Afterwards k means it is spring constant and omega means it is a magnification factor. So these formulas are already given in the during theory lectures. So f naught is equal to eccentric force, already हमको formula पता है, eccentric force m e omega square. So this is a standard formula. So eccentric mass, eccentricity and natural frequency square. This is the 10⁻³ इसलिए मल्टीप्लाई किया है कि eccentricity is given in terms of mm. So इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ so into, so natural frequency just we calculated 94.2477 whole square. तो इससे क्या मिलता है हमको, f naught मिलता है. उसके बाद तो k वैल्यू वी डोंट नो, तो k वैल्यू इज वी कैन फाइंड यूजिंग ओमेगा n इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ k बाय m. सो इसको यूज किया तो आपको k के वैल्यू मिल जाता है. तो when you find the value of k and omega n, so and magnification factor formula is given by in terms of zeta and what you can say frequency ratio is given by 1 by square root of 1 minus r square whole square plus 2 zeta r into whole square. अभी देखो magnification factor it is in terms of damping ratio and natural frequency ratio. So इसमें क्या है, r value is equal to 1, so already we have calculated, so that we have calculated r is equal to 1, frequency ratio is 1. so अगर इसमें r value equal to 1 सब्स्टिट्यूट किया तो क्या होता है, so 1 minus 1 become 0, this term completely it become 0. so here इसमें क्या होता है, तो r is equal to 1 means it is 2 zeta whole square. तो ओनली स्क्वायर रूट का अंदर क्या होता है, 2 जीटा होल स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो इसलिए क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर गेट कैंसल, तो इसलिए क्या हो जाता है, नीचे रिमेनिंग इज 2 जीटा 1 by 2 जीटा. तो अभी क्या क्या किया हमने, k वैल्यू फाइंड किया, ओमेगा वैल्यू फाइंड किया, तो उसके बाद f नॉट वैल्यू फाइंड किया, सभी क्या करने का, इस फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करने का. तो एम्पलीट्यूड इज ऑलरेडी गिवन, तो कितना है 0.018 mm. तो इसमें क्या होता है, इससे क्या मिलता है हमको, वैल्यू ऑफ डैम्पिंग रेशियो दैट इज 0.05. सो सेकंड हमको क्या फाइंड करने का था, सेकंड इज डैम्पिंग रेशियो. डैम्पिंग रेशियो इज इक्वल टू 0.05. सो इट इज अ फैक्टर, इट इज अ रेशियो, सो इसलिए इसका यूनिट नहीं होता है, डैम्पिंग रेशियो का यूनिट नहीं होता, इट इज 0.05. सो ये हो गया, तो एट ए गिवन स्पीड एट ए 900 rpm स्पीड हो गया डैम्पिंग रेशियो एंड फर्स्ट थिंग व्हाट वी कैलकुलेटेड इट इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी. अभी थर्ड में हमको क्या फाइंड करने का, सो एम्पलीट्यूड एंड फेज एंगल एट ए स्पीड ऑफ 1550 rpm. सो अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, स्पीड को चेंज हो जाता है. ओके, तो कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन व्हेन द मशीन रोटेट्स एट
ओके, सो इसका सब मिस्टेक हो गया, सो इट एट 1550 आरपीएम होना चाहिए, सो इट इज नॉट 1440, इट इज 1550 आरपीएम. सो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड द रेडियल फ्रीक्वेंसी. अभी देखो एम्पलीट्यूड को फाइंड करने का तो क्या करना पड़ेगा, तो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या है, एफ नॉट बाई के इंटू ओमेगा. तो इसमें ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन बाई 60, 2 पाई एन बाई एन का स्पीड का वैल्यू कितना है इधर 1550 बाई 60, सो इट इज 162.3156 रेडियन पर सेकेंड. हमको क्या फाइंड करने का है, हमको एम्पलीट्यूड को फाइंड करने का, हमको ये फॉर्मूला यूज करने का. तो इसमें क्या मिल गया हमको, सो अभी देखो ओमेगा तो मिल गया, तो एफ नॉट का वैल्यू गिवन बाय एम ई ओमेगा स्क्वायर. देखो फोर्स एट दिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, अभी हमने पिछले फॉर्मूला में क्या यूज किया था, ओमेगा एन, मतलब वो क्रिटिकल स्पीड था उस टाइम, क्या फोर्स कितना है वो होता. अभी इस पर्टिकुलर स्पीड पे फोर्स कितना होता है, एसेंट्रिक फोर्स, that is 1.2, m is 1.2 eccentric mass, eccentricity and omega square. Omega value कितना 162.3156 होल स्क्वायर. तो इस पे आपको क्या मिल गया, तो वैल्यू ऑफ एफ नॉट मिल गया 1422.7031 न्यूटन. नेक्स्ट इज, अभी देखो नेक्स्ट क्या फाइंड करने का हमको, के एंड ओमेगा. तो आर इज ओमेगा फाइंड करने तो हमको आर वैल्यू फाइंड करना चाहिए, फ्रीक्वेंसी रेशियो इज गिवन बाय ओमेगा एन. ओमेगा एन तो हमने प्रीवियस इसमें फाइंड कर दिया, क्रिटिकल स्पीड, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी. तो इसमें ओमेगा इज 162.3156 बाय 94.24777, सो इट इज इक्वल टू 1.7222. ये हो गया फ्रीक्वेंसी रेशियो. So now we can put the value of zeta and, अभी देखो स्पीड चेंज होने से जीटा चेंज नहीं होता है, सो जीटा इज अ डैम्पिंग फैक्टर. ओके, तो जीटा स्पीड चेंज होने से उसका फ्रीक्वेंसी रेशियो चेंज होता है, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन बाय 60. तो एन चेंज होने से क्या होता है, अभी देखो एन चेंज होने से तो ओमेगा वैल्यू चेंज होता है, ओमेगा वैल्यू चेंज होने से क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी रेशियो चेंज होता है. तो इसलिए तो हमको मैग्निफिकेशन फैक्टर अगेन वी नीड टू फाइंड, सब्स्टिट्यूट आर वैल्यू वन जीटा, R value is 1.7222 and zeta is 0.05. So it is I think 1.7 missing है इधर, तो इस 1.722 होना चाहिए, 1.722 होल स्क्वायर. थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो जस्ट सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ R and zeta here, so we get the zeta is omega is equal to 0.5067. So this is the damping magnification factor. So हम is equal to 0.5067. तो इसमें हमको क्या क्या मिल गया, तो आर मिल गया, सॉरी आर मिल गया, एफ नॉट मिल गया, एफ नॉट से के ओमेगा मिल गया. तो वी कैन डायरेक्टली गो एंड सब्स्टिट्यूट. सो एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू, के तो ऑलरेडी फाइंड किया हमने, के वैल्यू कितना आया था, के वैल्यू, सो इट इज इक्वल टू 266.47. सो के एंड जीटा इज, दीज आर द मटेरियल पैरामीटर्स. स्प्रिंग कांस्टेंट एंड डैम्पिंग पैरामीटर आर मटेरियल पैरामीटर्स, इसलिए स्पीड चेंज होने से इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है. ओके, तो सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज एफ नॉट बाय के इनटू ओमेगा. तो इफ यू सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज, सो वी गेट एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 0.0027 मीटर. ए हो गया, तो एम्पलीट्यूड एट द speed of 1550 rpm. So next is calculate the phase angle when the machine rotates at 1550 rpm. Maybe again printing mistake hai, so it is at the 1550 rpm. So phase angle to simple formula है, tan pi is equal to 2 zeta r by 1 minus r square. So zeta is 0.05, 2 into 0.05, r is 1.7222. क्योंकि r क्यों 1.722 ले रहे हैं, तो हमको फेज एंगल फाइंड करने के एट 1550 rpm. 1550 rpm में, तो what is the value of frequency ratio, it is 1.722. So that's why, so we need to take the r is equal to 1.722. Again 1 minus 1.722 square. So if you simplify this, so we get the tan pi is equal to minus 0.0876
So you just go for this tan inverse of this angle. So it is minus 5 degree. Minus 5 degree means it is out of phase. So it is 180 plus it is 175 degree. So you can say phase angle is either minus 5 degree, otherwise it is 175 डिग्री. माइनस आए तो आपको क्या करने का, जस्ट प्लस 180 से ऐड करने का, तो आपको जो एंगल मिलता है दैट इज फेज डिफरेंस 175 डिग्री. Okay, so this is the one problem. Okay, so next let's say one more problem. Okay, so second problem is a machine of 100 kg. So it is 100 kg machine has a 20 kg rotor with 0.5 mm eccentricity. So it is a rotor. The mounting springs have the 85 into 10 to 3 Newton per meter. तो जो माउंटिंग स्प्रिंग्स है तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, तो इट्स स्प्रिंग कांस्टेंट इज 85 into 10 to 3 Newton per meter. The damping ratio is 0.02. The operating speed is 600 rpm. The damping ratio, that is zeta value is given, it is 0.02. The operating speed is 600 rpm. And unit is constructed to move the vertically. So unit is constructed to move the vertically, means मतलब इसको vertically movement करने के लिए यूज किया जाता है. Find the dynamic amplitude of the machine and the force transmitted to the supports. So अभी देखो what is given in the problem, it is m is given, mass, eccentric mass is given 20 kg, m is equal to 100 kg, small m is equal to 20 kg, eccentricity is 0.5 mm multiplied by 10 to 3 किया तो आपको मीटर में मिल जाता है, क्योंकि eccentricity is given in the mm. Zeta damping ratio is 0.02, k is equal to 85 into 10 to 3 Newton per meter, spring constant. Speed कितना दिया, speed is given is 600 rpm. So what we need to find is, so we need to calculate the dynamic amplitude of machine, that is amplitude of the machine and force transmitted to the supports, ft. Okay, so let us see how to calculate these values. First देखो amplitude को find करने के, तो amplitude को find करने के तो again we have to go for the same formula, that is x is equal to f naught by k into omega, sorry f naught by k into omega, yes omega. Okay, so उसके पहले so we need to find the f naught value, k value and omega value. So f naught को फाइंड करने तो क्या 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 मिलना चाहिए, क्या कैलकुलेट करना चाहिए, तो ओमेगा, दैट इज फ्रीक्वेंसी, रेडियल फ्रीक्वेंसी. ओमेगा इज इक्वल टू 2πn/60. सो n ऑलरेडी दिया प्रॉब्लम में, तो हम ऑलरेडी ओमेगा इज इक्वल टू 62.8318 रेडियन पर सेकेंड. अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी से है तो सो वी कैन गो फॉर द k/m, स्क्वायर रूट ऑफ k/m. तो इससे क्या मिल जाता है हमको, नेचुरल फ्रीक्वेंसी दैट इज 29.1547 रेडियन पर सेकंड. ये सिस्टम का जो प्रेजेंट कंडीशन है एट दिस पर्टिकुलर स्पीड, ये फ्रीक्वेंसी हो गए, ये होता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी. f naught is equal to क्या, इट इज गिवन बाय m e into omega square. देखो एट दिस पर्टिकुलर स्पीड, इफ इट इज नेचुरल स्पीड, क्रिटिकल स्पीड, उस टाइम पे इधर क्या होता है, सो इट इज ओमेगा n स्क्वायर होता है. नहीं तो क्या होता है, सो इट इज व्हाटएवर द स्पीड है, व्हाटएवर द ओमेगा वैल्यू पर गिवन स्पीड, उसका ओमेगा वैल्यू लेना चाहिए इधर, m e omega square. So 20 m eccentric mass is given is 20 kg, eccentricity is 0.5 mm, so multiplied by 10 to minus 3 to convert into mm, sorry to convert into meter. Omega is 62.8318 square. So if we substitute all the values, so we get the f is equal to 39.4783 Newton. ये हो गए f naught वैल्यू.
Next, we know that we need to use this formula x is equal to f naught by k into omega. Already we have calculated the value of f naught here. So k is already given. तो omega को find करने के तो omega that is magnification factor. तो इसको find करने के तो हमको चाहिए. So we need the frequency ratio. Frequency ratio is given by omega n. So that these two values already calculated in the previous slide. So that is it is given by the 2.1551. So we have calculated the omega here and omega n here. So its ratio is 2.1551. So just substitute the r and zeta. So zeta is already given here. So damping ratio is 0.02. So substituting r value and zeta value. So 1 minus its formula is given by 1 by square root of 1 minus r square whole square plus 2 zeta r whole square. So omega is equal to substituting r value and zeta value. So and simplify. So we get the magnification factor is 0.2743. 0.2743. Okay, so now substituting value of f naught, k and omega in this formula. So we get the amplitude. So f naught is 39.4783. K is 85 into 10 to 3. It is given in the problem. So omega is 0.2743. So we get the amplitude is 1.2739 into 10 to minus 4 meter. Next is calculate the force transmitted to the supports. अभी देखो force transmitted to the supports is formula. This formula is given by the Ft by F naught. Force transmitted to the supports divided by force applied. So it is the force applied. It is transmitted. So इसको बोलते हैं हम isolation factor. So it is ratio is equal to this formula is given by magnification factor into square root of 1 plus 2 zeta whole square. So ये formula याद रखना चाहिए. So F naught just we calculated. So this value is also calculated. Zeta is also calculated. R is also calculated. Only unknown is Ft. So just simply substitute all the values. So F naught is 39.4783. Omega is 0.2743 into square root of 1 plus 2 into 0.02. Damping ratio is 0.02. Frequency ratio is 2.1551 whole square. So if we simplify this, so Ft is equal to 10.869 Newton. तो मतलब force transmitted from machine to the foundation is equal to 10.869 Newton. So which is what you can say. So this is not a good sign because if the force transmitting to the foundation means so damping is not enough. So matlab there it is creating the some vibrations. So which is we need to avoid. We need to completely eliminate this transmitted force to the foundations. Okay. Oh, okay. So if you have any doubts, so let me know so that I can clear your doubts. So किसी को कुछ doubts है? So Arvash and Tejas. So if you have any doubts, so whatever you have seen two problems today. देखो first of all, so I think you need to be regular to understand this a bit because vibration is somewhat new concepts you are going to see so every day. So if you are regular, so you can understand much better. So if you miss in between classes, then it will become like new concept for you, so you may not able to understand properly. So I request everyone, so whenever I am having lecture, so be prepared and be what you can say, whatever I'm going to share you videos. So sometimes I share you pre-recorded lectures by using YouTube. So at least you go through that what you can say lectures
So now also I'm sometimes what I'm doing is, so I record the lectures and I share with you people. So if you watch that, at least if you not attend at live, so it will be helpful for you to understand properly. So otherwise, so unnecessarily it creates problem. Okay, so Vaibhav, so do you have any doubt? No, sir. No, okay. So okay, thank you. So I'm again going to see in the next lecture. So now second unit has been completed. So in the next lecture, so I'm going to start the unit number 3. Okay. So thank you. Bye. Okay, See you sir. in next lecture.